Hello everyone. So in the previous lecture we have already learned that how our earth interior operates and what are the major important methods through which we can know about earth interior. And there we learn about the study of temperature, there we learn about pressure, density methods, as well as we tried our level best to understand that how volcanism also helps in understanding Earth's interior. Apart from this, we also need to know that how the study of meteorites also help. Meteorites, you know, these are those near Earth objects which sometimes enter into the Earth's atmosphere and reach on the surface in the form of rock. When they enter into the mesosphere, they start burning because of the friction, heat, and when they reach on the surface in the form of rock, then these are also studied. And that study helps us in knowing that the core part of the earth should be made up of iron and nickel. But you know that be it the study of temperature, pressure and density or the study of volcano or the meteorites, these have good informations, but these are shallow information. Temperature, pressure and density helped us, but that is more about the mathematical derivation. And the study of meteorite and the volcano is giving us the real picture and the real substance to which we can touch, we can feel. But the problem is that these are giving us shallow information. Say for example that if the volcano is giving us information up to the depth of 100 kilometer, say 200 kilometer, is it sufficient to make any concrete prediction? Is it sufficient to develop any assumption that the Earth's interior should look like this? There should be this temperature and this pressure. No, because if a shallow subject is given to you to observe, it is never sufficient to say that this kind of information is a very reliable information. Similarly, when we study about the meteorites, we cannot say that the small size of meteorite should be exactly the replica of the such a large size of the earth interior. हाँ, assumptions बना हम सकते हैं कि since this is like this and that is why it should be like that. But that assumption is based on a shallow information and that's why it is full of hollowness. तो अब हमें क्या करना चाहिए? This is the reason why finally we had reached up to the information and after the volcanism we had reached up to the information, and that is called the study of seismicity. What is seismicity? So seismicity is like earthquake waves. A very simple question is that what are earthquake waves? And if we are able to understand that what are earthquake waves, we can very easily understand that how do these waves operate and how their operation or the function is helpful in gathering information about the interior. All right, what are seismic waves? Just try to understand. Suppose if any surface is like this, it is A, B and C. A surface is there, it has three blocks A, B and C. Now if any force is applied upon it, like this, suppose it is my hand, if the force is applied upon it, then this force energy will start flowing through the medium, flowing through the medium like this. Whenever it is flowing through the medium, then this medium also has resistance. Medium also has resistance. अब ये जो मीडियम का रेसिस्टेंस है, जो इनर्शिया है इस मीडियम का, उस मीडियम से ज़्यादा फोर्स अगर ये अप्लाई हो रहा है तब तो ये ए बी सी को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जाएगी, और अगर उससे ज़्यादा फोर्स, अगर उससे कम फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो ये उसको क्रॉस करके आगे नहीं जाएगी।
मेरी बात समझ में आई? सपोज अगर मैं एक पीस ऑफ पेपर लूं, मान लीजिए कि ये एक पीस ऑफ पेपर है और इस पीस ऑफ पेपर पे कोई फोर्स मैंने अप्लाई किया ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका भी एक अपना इनर्शिया फोर्स है, ये आगे मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर ये फोर्स ऐसे ना हो कि ऐसे है, नाउ इट इज मूविंग, ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, ये ज्यादा मूव करेगा, ठीक ना। तो इसी सेंस में अगर आप यहां पे देखिए कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और आगे की तरफ ये बढ़ रहा है, तो इस फोर्स में एक खास बात आएगी, वो ये होगी कि ये फोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस फोर्स का अपना जो रेसिस्टेंस है वो भी अप्लाई होगा। अगर ये फोर्स इज ग्रेटर देन, दिस फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ इनर्शिया, तो ये आगे मूव करेगा, और अगर ये ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो ये एनर्जी आगे मूव नहीं करेगी। नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप देखिए that this energy will always flow like a wave, अब ये जो फोर्स ज्यादा है इस इनर्शिया से, इसकी वजह से क्या होगा कि while moving over the surface ये फोर्स इस मीडियम को आगे की तरफ स्ट्रेच करेगा, और जब ये फोर्स आगे बढ़ जाएगा तो फिर ये पीछे की तरफ वापस आएगा। इट मींस ये जो मीडियम के जो इसके जो एटम्स होंगे, जो इसके जो कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो ऐसे ऐसे मूव करेंगे, और ये जो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड शेकिंग, एंड इफ द फोर्स इज रियली मैसिव and far greater than the inertia, so this shaking will be deep and high. Fine, very deep shaking and the high on magnitude, and that is, if this thing is happening in the earth's surface, so that is called earthquake. मतलब क्या कि earthquake is actually outcome of the flow of energy which is passing through the medium of the earth's surface. That energy is coming when any external force is applied upon it, which is breaking that force of inertia, crossing that threshold of the force of inertia, and that is why it is passing through this. तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम बन रहा है, दिस सिस्टम इज कॉजिंग अर्थक्वेक। क्लियर? अब देखिए, अब अगर ये अर्थक्वेक अगर बाहर निकल रहा है और मैंने कहा कि ये वेव है, तो ये वेव किस किस फॉर्म में आएगा, ये वेव किस किस फॉर्म में आएगा, आप ये देखिए। तो दिस विल कम इन द फॉर्म ऑफ primary wave and secondary wave. Primary wave is that one which has maximum velocity. Primary wave has maximum velocity and it can pass through all mediums, that is solid, liquid and gas. All right, whereas the secondary wave is there, that can pass through, means कि its velocity is lesser than p, velocity is lesser than p, and it can pass through only solid medium and cannot pass through liquid or gas. अब ये दो डिफरेंस आए इसमें, these both are considered as body wave.
और बॉडी वेव की ये प्रॉपर्टीज आई, मैक्सिमम वेलोसिटी, सेकेंड बेस्ट वेलोसिटी, it can pass through all mediums, solid, liquid and gas. It can pass through only solid medium, not through the liquid and gas. अब इससे क्या रिजल्ट आएगा, क्या हम समझने वाले हैं कि अब अगर मान लो कि इफ एनी अर्थ सरफेस इज देयर, आइडिया ये है कि सपोज on this earth surface, if earthquake is coming here and after this the waves are passing in all the directions, so this wave should be P wave, S wave should be passing through all, so that P and S should be reaching in all the directions. P and S should be reaching into all the directions. अगर वो सारे डायरेक्शन में अगर नहीं पहुंच रहे हैं या कोई एक पहुंच रहा है और दूसरा नहीं पहुंच रहा है, तो नहीं पहुंचने वाला जिस किसी भी वजह से नहीं पहुंच रहा है, वी कैन डिराइव द कंक्लूजन दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द मीडियम। आर यू गेटिंग दिस? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि दिस इज द पी वेव विच हैज रीच्ड एवरीवेयर, है ना, P wave that has reached everywhere, and the S wave is not reaching. It means that the medium is liquid or the gaseous, because S wave can travel through only the solid medium, not the liquid and the gaseous medium. But the P wave can travel through all the medium. If the P wave is reaching everywhere, then we cannot say, cannot answer conclusively that whether the medium is solid, liquid or gaseous. But if the S wave is also reaching all across the region, then we can say that the medium is definitely solid. Had it been liquid or the gaseous, then the S wave was not reaching over there. I hope you are getting this argument. On the basis of this, we find this diagram. Now here you see that epicenter is the point from where this seismic wave is reaching on the surface, and this is the point where we can say it is the focus, because from focus everything originates. Thereafter the P wave and the S wave are reaching from here to here to here. But what actually we find out that from the distance of the focus, if we say at the 105 degree, there is a zone from where S wave is not visible. You can see S wave is not visible. Here P wave is coming, P wave, P and P, but there is no S wave. What does it suggest? It suggests that there is the medium which is liquid, and this medium is this. This medium is this. This is the reason why from the middle of the interior, from the Earth's interior, बिल्कुल बीचों बीच के पार्ट से जो S wave है वो S wave ट्रेवल नहीं कर पा रही है ना, जबकि जो P wave है वो ट्रेवल कर सकती है, और वो क्योंकि वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सबसे ट्रैवल कर सकती है, इसीलिए पी वेव भी नीचे पहुंची। लेकिन एक खास बात है कि 105 से 105 डिग्री, है ना, 105 to 105 डिग्री, दिस इज कॉल्ड शैडो जोन ऑफ एस वेव, ठीक ना, क्योंकि यहां पर एस वेव नहीं मिलती है, तो ये तो पूरा का पूरा शैडो जोन हो गया। लेकिन एक दूसरी बात आप देखेंगे कि P wave after not coming on the surface from 105 degree, it re-emerges on the surface at the angle of 140 to 145 degree. Fine. अब आप देखिए इसका मतलब क्या है कि 140 to 145 डिग्री, 105 to 145, 105 to 145 डिग्री SP वेव भी सरफेस पे नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि दिस इज द शैडो जोन ऑफ P वेव, दिस इज द शैडो जोन ऑफ
पी वेव। और ये जो पी वेव का जो शैडो जोन है ये बता रहा है कि यस, अर्थ इंटीरियर में डेफिनेटली हमारा मीडियम का डिफरेंस आया, और इस मीडियम के डिफरेंस की वजह से, मीडियम का डिफरेंस का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये जो मीडियम का डिफरेंस आया तो उसकी वजह से जो पी वेव है उसका जो रिफ्रैक्शन का एंगल था वो काफी हाई हो गया। अब ये रिफ्रैक्शन का एंगल अगर काफी हाई हो गया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन अ राइट पाथ, फाइन, विच एवर इट हैड, इट रिफ्रैक्टेड ए लॉट, ये काफी ज्यादा मुड़ गई आगे, और इसके मुड़ जाने की वजह से एक बार तो ये यहां पे आई और दूसरी बार ये यहां पे आई, ये पूरा का पूरा बीच का जोन इसका शैडो जोन बना। अब ये क्लियरली बताता है कि ये वाला पार्ट में लिक्विड है। क्लियर? अब इस बात को समझने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास कंक्लूजन क्या आया। तो कंक्लूजन ये हमारा बता रहा है दैट अर्थ इंटीरियर हैज डिफरेंट पार्ट्स। वी कैन से दैट इट इज लाइक दिस। This part is crust. This part is upper mantle. This part is lower mantle. This part is outer core, and this part is inner core. ऑलराइट, अभी जो क्रस्ट है अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अगर हम इसको देखें जो लोअर मेंटल का एंड है दैट इज 2900 किलोमीटर, और जो ये है 5150 किलोमीटर, दिस इज 6370 किलोमीटर, फाइन। और ये है आपके पास मैक्सिमम 40 to 45 किलोमीटर। ऑलराइट, तो 40 to 45 किलोमीटर मैक्सिमम है क्रस्ट। जो मैंटल है दैट इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, मीन्स दिस इज द थिकनेस ऑफ द मैंटल, एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ द आउटर कोर, एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ द इनर कोर। ऑलराइट, आप सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं ये निकालने के लिए कि ये क्या क्या आएगा। अब जो मैंने क्रस्ट को कहा 40 to 45 किलोमीटर, ये क्रस्ट एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसको हम बोलते हैं अपर क्रस्ट और ये होता है लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज कॉन्टिनेंटल and this is oceanic. फाइन। अब इसकी जो डेप्थ है ये है 40 to 45 किलोमीटर और ये है 0 to 10 किलोमीटर। फाइन। अब आप देखिए, नाउ वी कैन से दैट between all these two there should be zone of discontinuities, upper crust, lower crust, upper mantle, lower mantle, outer core, inner core. और ये जो discontinuities हैं, these are frequently asked question. When we talk about the upper crust and lower crust, there is cono-rod discontinuity, here it is Mohorovic discontinuity, Repethy discontinuity, Gutenberg discontinuity, and this is Lehman discontinuity. Lehman discontinuity. अब आप इसको याद कर सकते हैं, इट इज इजी टू मेमोराइज। एंड हाउ विल यू मेमोराइज इट? Here it is CM
CMRGL. Fine. CMRGL. That you can say CM Rajasthan is Gehlot. CM Rajasthan is Gehlot. So here we can say that, here we can memorize that C for Konorod, M for Mohorovic, R for Rapiti, G for Gutenberg, L for Lehman. And your job is done. Besides this crust, mantle, core, outer core, inner core, we have other classification also, and that classification comes as Sial, Sima and Nife. That classification comes as Sial, Sima and Nife. Sial, Sima and Nife. That was given by Suez, silica, aluminium, and that is mainly about the crust. This is mainly about the mantle, and this is mainly about the core. Sial, Sima and Nife, crust, mantle and core. It was given by Suez. And the other classification is also there, which talks about lithosphere, asthenosphere, mesosphere and barosphere. This classification also has a major significance, and especially it has application in the theory of plate tectonics, about which we will learn in the next video. I hope you enjoyed this video. Keep watching us. Thank you very much. Bye bye.